अस्सलामुअलैकुम। VMware vSphere बैच नंबर 1 सेशन नंबर 18 स्टार्ट हो चुका है। ये है लास्ट सेशन ऑफ द वीक। इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को छुट्टियाँ होगी, 4 दिन की छुट्टियाँ। वो इस सेशन के बाद खूब एंजॉय करें, प्रीवियस काम भी कंप्लीट करें अगर किसी का रहता है, और फिर हम कमिंग फ्राइडे को फिर मिलेंगे सेशन नंबर 19 में इंशाल्लाह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सर्वर रेडी है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सर्वर रेडी हो गए हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें कि कोर्स कंटेंट में हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू vSphere विद टेंजो में। हमारे पास ये लेसन है, इसमें हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो ये हम टेंजो इस हद तक पढ़ेंगे कि हमारा vSphere में वो कवर हो जाए। तो हमारा लेसन नंबर 14 इंट्रोडक्शन टू vSphere विद टेंजो स्टार्ट हुआ चाहता है अभी। लेसन 13 कल खत्म हुआ है। इसका नाम था vSphere मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस के। आपको vSphere का जो एनवायरनमेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करना है, बेसिकली ओवरव्यू के जरिए भी हमने कल किया था और एडवांस के जरिए भी। तो इंट्रोडक्शन टू vSphere with Tenzo. vSphere 7 is the biggest release of vSphere in over a decade and delivers these innovations in the re-architecting of vSphere with native Kubernetes that we introduced at VMworld 2019 as Project Pacific. यहाँ पर मैं अपने सर्वर का लॉगिन भी ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं अपने vSphere क्लाइंट का लॉगिन भी ले लेता हूँ। लॉगिन ले लिया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट का मैंने, वी का मतलब है वर्चुअल, स्फीयर का मतलब एनवायरनमेंट। अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का मैंने क्या लिया, एक्सेस ले लिया vSphere क्लाइंट के जरिए। कॉमन प्लेटफॉर्म for running both Kubernetes containerized workloads and VMs. So Kubernetes is now built into vSphere, which allows developers to continue using the same industry standard tools and interfaces they have been using to create modern applications. vSphere admins also benefit because they can help and manage the Kubernetes infrastructure using the same tools and skills they have developed around vSphere. To help bridge these two worlds, we have introduced a new vSphere construct called namespaces, allowing vSphere admins to create a logical set of resources, permissions, and policies that enable an application-centric approach. Agile operations for Kubernetes applications. We are introducing a lot of value in vSphere with Tensor for the VI admin, virtual infrastructure admin. We deliver a new way to manage infrastructure called application focused management for containerized applications. This enables admins to apply policies to an entire group of objects and organize multiple objects into a logical group and then apply policies to the entire group. For example, an administrator can apply security policies and storage limits to a group of containers and Kubernetes clusters. They represent an application rather than to each of the objects individually. This helps improve productivity and reduce errors that can be costly to identify and correct. ये था हमारा Agile Operations for Kubernetes Applications. VMware Cloud Foundation What Services. बस ये लेसन ख़त्म ही होने वाला है। इसमें हम आप लोग देख रहे हैं ना, मैं इसको इतना समझा भी नहीं रहा आप लोगों को, ना कुछ करवा रहा हूँ इसमें, ना थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये टॉपिक जो ना आप लोग के समझने की नहीं है। क्यों? ये बहुत एडवांस टॉपिक्स है इसमें, और टेंजो वगैरह तो कुबरनेटिस, तो इसको समझने के लिए आपको vSphere पूरा आना चाहिए, और आपको तो vSphere आधे से कम आता है ना, इसलिए इस पर आप नहीं समझेंगे, तो इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, तो प्रैक्टिकल काम इसमें VMware का मैंने खुद भी इस स्लाइड में आपको प्रोवाइड नहीं किया कि ये स्टेप करो और इस तरह vSphere क्लाइंट में ये स्टेप करके ये लेब करो इस लेसन का, तो इन्होंने खुद भी इस लेसन में लेब नहीं दिया, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स है ना, तो आप इसे नहीं समझेंगे, तो इसलिए हम इसे ऐसा समझे कि बस स्किप ही कर रहे हैं ना, क्योंकि ये आपके समझने की बात नहीं है, ये एडवांस टॉपिक्स है।
जब आप vSphere करेंगे आप तभी समझेंगे, सही है। तो इस पर अगर मैं आपको समझा भी दूंगा तो फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं और आप तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं ना, आपने तो पूरा vSphere भी नहीं समझा। ये उससे एडवांस चीज़ें हैं, सही है। कुबरनीटीज और टेंजो वगैरह, तो इसलिए इसे नहीं चले तो अच्छा है, क्योंकि आपको फिर जो आपको मैंने समझाया है ना 200 स्लाइड, फिर आप वो भूल जाएंगे अगर मैं इस पर समझाना शुरू करूँ। ये बहुत ज़्यादा पे टाइम है, सही है ना। अगर मैं आपको कुबरनीटीज समझाऊँ या टेंजो समझाऊँ, अगर देखें ना तो इन्होंने भी शॉर्टकट करके बस थोड़ी चीज़ें जिन स्लाइड्स में एक्सप्लेन की और बस नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ गए हैं, तो इसलिए इन्होंने भी स्किप किया है इसको, बस वैसे ही डाला है। तो आखिर बार दोबारा कहूँ कि अगर आप ना समझे खैर है, अच्छी बात है, क्योंकि इस पर समझना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक्स है, अगर मैं इस पर समझाना शुरू करूँ तो ये फिर अलग सा टाइम लेगा, ये अलग सा फिर इस पर स्टडी करनी पड़ती है। टेंस जो है वो विजुअल की तरह एक अलग चीज़ है, इस तरह कुबरनीटीज विजुअल की तरह एक अलग कोर्स है, तो फिर वो तो कोर्स बन जाएगा, फिर हमारा विस्फीयर से तवज्जो हट जाएगी, बात कहीं और चली जाएगी। तो हमें विस्फीयर के अंदर ही रहना चाहिए ना, जिस तरह इन्होंने स्किप किया लेब वगैरह नहीं है कि, तो इसलिए हम भी इसे स्किप ही करेंगे, यानी जिस तरह इन्होंने किया हम उसी तरह जाएंगे, सही ना। लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, अगर चले गए तो फिर बात कहीं और चली जाएगी, फिर हम अगर टेंजू समझेंगे तो फिर वो टेंजू का अलग कोर्स होगा, अलग लेब से, फिर मैं वो आपको वो कराऊंगा, तो बात कहीं और चली जाएगी। अगर मैं आपको कुबरनीटीज पर समझाऊँ तो फिर वो अलग सा चीज़ है, अलग सा कोर्स, तो बात कहीं और चली जाएंगी, तो आप इसे स्किप ही करें। फिर अगर आप नहीं समझ रहे हैं, गुड, वेल एंड गुड, बिकॉज इसे समझना आप लोग के लिए इस लेवल तक जरूरी नहीं, तो आपने घबराना नहीं है, सही है। हम अगले लेसन में फिर सही से पढ़ेंगे विषय में। VMware Cloud Foundation Services. So vSphere with Tenzo is available through VMware Cloud Foundation for with Tenzo. One key innovation available only in VMware Cloud Foundation is set of developer-facing services and Kubernetes API service that IT can provision called VMware Cloud Foundation services. Modern hybrid cloud, VMware Cloud Foundation with Tenzo business outcomes, time to market, innovation, scale, differentiation, cost reduction, customer experience. Applications में traditional apps से reduce cost plus security, reliability and control. Cloud native apps है time to market plus innovation, scale and differentiation. Optimize, maintain, replatform, refactor, develop new apps. इस तरह अगर हम मैनेजमेंट में देखें, विजिबिलिटी है, ऑपरेशन है, ऑटोमेशन है, सिक्योरिटी है। VMware क्लाउड फाउंडेशन सर्विसेज में देखें तो 10 जुड़न टाइम सर्विसेज और कुबरनीटीज एनालिस्ट एपीआईज, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और न्यू में हमारे पास फ्यूचर सर्विसेज। पब्लिक क्लाउड एज डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारा मॉडर्न हाइब्रिड क्लाउड का VMware क्लाउड फाउंडेशन में 10 का डायग्राम है। It consists of two families of services, Tanzu runtime services and hybrid infrastructure services. Tanzu runtime services, मैं सिर्फ फॉर्म को बड़ा कर देता हूँ, deliver core Kubernetes development services, including an up-to-date distribution of Tanzu Kubernetes Grid service, which allows developers to manage consistent, compliant, and comfort Kubernetes clusters to build your modern applications. Hybrid infrastructure services include full Kubernetes and REST API access that spans creating and manipulating virtual machines, containers, storage, networking, and other core capabilities. And it includes the following services today. Each report service extends Kubernetes with the ability to run pods directly on the hypervisor when developers deploy containers using the vSphere pod service. They get the same level of security, isolation, performance, Kubernetes, and management capabilities that VMs enjoy. Storage service allows developers to manage persistent disks for use with containers, Kubernetes, and virtual machines. Network service में हमारे पास क्या आता है, allows developer to manage virtual load balancers and firewall rules. Registry service में क्या आता है, allows developers to store what manage करे and better secure Docker and OCI images using Hibernate.
इसे ऐसा समझे कि इस लेसन को जो हमारा ये लेसन स्टार्ट हो जाता है ना, ये वाला, इसे लेसन 14 इंट्रोडक्शन टू vSphere with 10, इसे ऐसा समझे कि हमने पढ़ा ही नहीं, यानी हमने इसे स्किप कर दिया, ऐसा समझे कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अगर होता तो ये देखिए ना, इन्होंने भी आपके सामने, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सारे टॉपिक्स इसमें खत्म हो गए ना, इन्होंने कुछ थ्योरेटिकल बेसिक्स से समझाया आपको, और न इसमें कुछ लैब करवाइए कि ये स्टेप है, इसमें जाकर भी ये लैब करो इसका, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये खुद भी स्किप कर रहे हैं। इसलिए अगर होता तो फिर ये लैब जो अगर आपको करवाते, कुछ समझाते बेसिक से, तो ये बहुत एडवांस बातें कर रही है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं आपको समझाऊँ भी तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दिन लग जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि वो फिर अलग कोर्सेस है ना, कुबरनेटिस अलग, टेंजूम अलग, वीमवेयर क्लाउड फाउंडेशन वाला अलग, तो ये बहुत ज़्यादा किस्सा vSphere से अलग हो जाएगा, और हमने उस हद तक जाना है कि हमें हमारे vSphere में मदद हो जाएगी सिर्फ। सही है। तो आपने इस लेसन में क्या सीखना है? बस सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है कि आपको ये नाम आ सके, और कुछ भी ना सीखे कि ये होता क्या है ये चीज़। बस ये कुबरनेटिस टेंजू ये चीज़ नाम नाम सीखे सिर्फ इस लेसन 14 में। सही है। इसमें और कुछ भी नहीं है, ना लेब वगैरह कुछ भी। आपके सामने लेब आया नहीं आया, तो इसका मतलब है VMware ऑफिशियली अभी तक के लेवल, आपका जो लेवल है ना vSphere का, जो आप सीख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एडवांस चीज़ है, आपको वो कंटेंट में दिखा रहे हैं, बेसिक से नहीं सिखा रहे हैं, तो उसका मतलब है आप ऐसे स्किप ही करो। सही है। परेशान मत हो। बस सिर्फ लेसन 14 में मैं आखिर बार कह रहा हूँ कि आपने एक एक चीज़ सीखनी है कि कुबरनेटिस और केंजू का नाम नाम सीखना है कि ये नाम है इसका, बस। समझना भी इसे नहीं है। सही है ना। ये एडवांस लेवल की चीज़ है। दोबारा कह रहा हूँ, इसे समझे मत कि ये क्या चीज़ है, ये आपके लेवल के नहीं है। सही है। तो ये कंक्लूड अब हम करेंगे, और फिर अगला लेसन हम स्टार्ट करेंगे। सही है। ऐसा समझे कि ये विश्व कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर होता तो लेब वगैरह होते, ऐसा समझे ये स्किप है, क्योंकि इन्होंने खुद इसे स्किप ही किया है ना, आपको बेसिक से नहीं समझाया, आपको लेब वगैरह नहीं करवाया, इसलिए। Conclusion: VMware Visual 7 is the efficient and secure platform of the hybrid cloud. It provides powerful, flexible, and secure foundation of business agility that accelerates the digital transformation to the hybrid cloud, as well as success in the digital economy. Here are other visual apps to get familiar with the latest Visual 7 release. Chapter क्या लिखा था? VMware vSphere What's New? VMware vSphere What's New वाला नहीं था हमारे पास। Let me search it here. Answers box. ये भी शो नहीं वाला। पता नहीं कि क्यों नहीं आ रही है। I think यही वाला है। Yes, yes. Here it is.
उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। एक तो इतने पासवर्ड होते हैं ना, तो पासवर्ड की याद ही नहीं है। कौन सा पासवर्ड? लीव इट। Let's let me send these links in the group. तो आते हैं पर इस तरह इसके मैं भेजता हूँ VMware vSphere with 10 zone। Let's move forward. Lesson 14 successfully completed। खत्म हो गया। स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर को, लेक्चर 88 को। और देखते हैं हमारा अगला लेसन कौन सा है। लेसन 14 खत्म हुआ है, तो अब स्टार्ट होगा लेसन नंबर 15। ओके, देखते हैं लेसन 15 का नाम क्या है। इतना लेसन 14 यहाँ पर खत्म। अब स्टार्ट हो जाएगा लेसन नंबर 15। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू vSphere with 10 में हमने ये पढ़ा। अब हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे, ये दो चीज़ें, इन दोनों में वीडियोज है, सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E6i इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। इसके बाद पर सर्टिफिकेशन पाथ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर लेसन है। इसके बाद लास्ट लेसन है 16 नंबर पर। ये मॉड्यूल 1 खत्म, मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो।
तो लेसन का नाम है लेसन 15 का A6i इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। इसमें हम सीखेंगे A6i इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये लिब हमने काफ़ी आई थिंक मैंने ये आपको करवाया था शुरू में ही कि हाउ टू इंस्टॉल A6i hypervisor on hardware and how to configure A6i। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये करवाया था। ये भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए मैंने करवाया था इंस्टॉलेशन A6i का। देखिए लेसन 2 में मैंने आपको समझाया था हाउ टू इंस्टॉल A6i एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर A6i। लेसन 2 में मैंने सिखाया था अगर याद हो। और यहाँ पर क्या चीज़ है A6i इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर लेसन 15 में दोबारा रिपीट हुआ है। मगर फ़र्क क्या है कि उसमें आपने प्रैक्टिकल काम किया था, थ्योरेटिकल समझा था। इसमें आप वीडियोस के जरिए समझेंगे थोड़ा एडवांस, सिर्फ यही फ़र्क है। और ये वही चीज़ है, कुछ और इसमें नहीं है। इसके बाद अगला लेसन में मॉड्यूल 1 ख़त्म, मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। और 3 मॉड्यूल थे इस कोर्स में, 6 महीने के कोर्स। ये देखिए मज़ा आया ना जी। A6i होस्ट क्लाइंट था, ये vSphere वेब क्लाइंट, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आगे बढ़ते हैं। A6i इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। सही। ड्यू टू द एनवायरनमेंट the hands on lathes are running in the high input-output. It would cause we are not able to install software. Please use the following videos to walk through the process. Video installing and configuring vSphere. ये तो इसे एक्स्ट्रा इंस्टॉल कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरिंग vSphere। ये तो vSphere का सही होगा। तो vSphere का मतलब ये है कि इसे एक्स्ट्रा यानी E6i इंस्टॉल कॉन्फ़िगर मतलब है vSphere इंस्टॉल कॉन्फ़िगर। अगर इसे साइन होगा ये होगा तो वर्चुअल इन्वायरमेंट vSphere वर्चुअल इन्वायरमेंट वो कैसे करना होगा। E6i के जरिए आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। वो नहीं होगा तो कैसे वर्चुअल मशीन होगा, कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा। The following video will walk through the process of installing and configuring vSphere. Welcome to our demonstration on how to install and configure a VMware vSphere host. For this demonstration, we will be installing ESXi 5.1. Before starting the installation, we need to download the ESXi ISO image and configure our host to boot from this image. When the host boots from the ISO image, the installer will load. After the installer loads, we are ready to begin the installation. Start by pressing Enter at the welcome screen and press F11 to accept the end-user license agreement. The host will now scan for the available disk drives. From the list of available disks, we select the disk drive on which we want to install ESXi. Note that if an existing ESXi image is detected on the disk, we will be asked if we want to install or upgrade that image. We will choose the Install option and press Enter. This will overwrite the existing ESXi image and configuration on the disk. If we wanted to preserve the existing host configuration, we would have needed to choose the Upgrade option. Next, we select the keyboard layout for our host and enter password for the root account. Note that the password must be at least 7 characters long, and we are asked to type it twice in order to verify if the correct password is used. We are now ready to begin the installation. Confirm that we are ready to install ESXi by pressing F11.
The ESXi software is now installed. Once the installation is complete, we unmount the ISO image or eject the CD and reboot the server. The host will now boot from the ESXi image installed on the disk. Next, we will configure the management network for our newly installed vSphere host. To do this, we will use the Direct Console User Interface, commonly referred to as the DCUI. Begin by connecting to the host console. From the main DCUI screen, press the F2 key to log in. Enter the login name of root, followed by the password that was specified during the installation. At the System Customization screen, we first have the option to set the root password. If, for some reason, we choose not to set the root password during the installation, or if we want to change the password, we select Configure Password. As we configured the password during installation, we will skip this step. Begin by selecting the Configure Management Network option. The first step to configuring the host management network is to identify the network adapters that will be used for the management traffic. It is recommended to select at least 2 NICs in order to provide for redundancy. Here we have selected VMNIC 0 and VMNIC 2. Next, we select the VLAN option. Specify the VLAN ID that has been assigned to the management network. If we are not using VLANs for the management network, we leave this value blank. Now, we'll configure the IP address of the host. We first select the option to set static IP address, and then provide the address, the subnet mask, and the gateway. Note that it is highly recommended to use a static IP address for the ESXi host. Also, the IP address should be resolvable in DNS for both forward and reverse lookup. Here, we are not using IPv6, so we skip this step. Now, we configure the DNS settings for the host. We select the DNS configuration and enter the primary and alternate DNS server, along with the host name of the ESXi host. Next, we can enter any custom DNS suffixes. With this, the configuration of the IP address is completed. So, we press Escape and answer Yes when asked to apply the changes. In the next step, we test the management network to make sure that the settings are configured properly. Here we see that it pings the gateway IP address, along with the IP address of the DNS server, and does a DNS lookup of the host name. Once all the tests are passed successfully, we press OK. The configuration of the management network is now complete. We press Escape to exit from the DCUI. At this point, we are ready to connect our host to the vCenter server, where it will be centrally managed along with our other vSphere hosts. This concludes our demonstration on how to install and configure a new vSphere host. Thank you. अपनी ESXi इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन चेक किया तफसीली कि हाउ टू इंस्टॉल ESXi, हाउ टू कॉन्फ़िगर ESXi। अगर आपने तफसीली समझकर एक एक स्टेप याद करना है और एक एक स्टेप को समझकर आपने करना है ना ESXi का इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कि आप एक एक स्टेप को समझे बाकायदा। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इस चैनल पर आइए, नेट प्लस वर्चुअल सर्च करें, प्लेलिस्ट में आइए, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो आप लोगों की जैसे तो आज Okay, sir. Thank you. हुआ बहुत बढ़िया हुआ, 1-2 घंटे का पता नहीं चला, कैसे टाइम निकल गया 2 घंटे का, जो कि फैशन में 2 ही लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत हमने प्रीवियस लेक्चर में यही बात पढ़ी थी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं
हम एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल ये आई एम सर्चिंग फॉर दैट कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पर मैं बिल्कुल भी 100% एग्री नहीं करता इस पार्टिसिपेंट से वो आईटी से और मोहम्मद इदरीस खान से ओरिजिनल मोयो से you all three people I disagree with you because you said in many questions you said me ये पर मैं सर्च करता हूँ कि कहाँ पर है E6i का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन अस्सलाम वालेकुम VMware vSphere पेज नंबर 1 लेक्चर अब इसमें कहाँ पर है लेट्स मी सर्च फॉर ऑल ऑफ यू इसमें मसला क्या था मसला है आपका जो प्रिफर्ड लैंग्वेज है आप में आप 3 मॉड्यूल खत्म कर सकते हैं 90 मिनट्स में हाउएवर पता नहीं कहाँ पर है लेट मी सर्च फॉर ऑल ऑफ यू आई एम स्टिल सर्चिंग ये है बहुत मुश्किल से मिल गया ये आप VMware विजुअल लेक्चर 10 फिर 15 अक्टूबर 2022 को सैटरडे को हुआ था आप इसको सर्च करें द पासवर्ड फील्ड ताकि आप पासवर्ड फील्ड पर जाए और सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगा कि E6i का इंस्टॉलेशन कैसे होता है और कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए हम आपको एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं समझा रहे हैं तफसीली 1 घंटा 28 मिनट में कि अगर आपको एक एक चीज़ स्टेप समझ आ जाए कि E6i को इंस्टॉल कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो तो आप ये तफसीली वीडियो देख सकते हैं इसके लिए सही आगे बढ़ते हैं video overview of the DCUI. This video will walk you through the direct console user interface. Welcome to our demonstration of the ESXi Direct Console. इसे हम DCUI कहते हैं डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस इस इंटरफेस को चाहिए E6i है प्रोवाइजर इंटरफेस है User interface, more commonly known as the DCUI. To begin, we first connect to the vSphere host console. In the top half of the screen, we see information about the ESXi version, along with some hardware characteristics of the host. In the bottom half, we see the host name and IP address, along with two options: F2 to customize the system and view logs, and F12 to shut down or restart. Let's begin by pressing F2. Log in. Here we will use the root user account with the password that was set during the installation. After logging in, we see the list of available configuration options. We can change the password by selecting the Configure Password option. Here, we specify the old password, type the new password, and then verify this password. We can also configure the lockdown mode, which is a special mode used to limit direct access to the host. When lockdown mode is enabled, we prevent access to the DCUI and require users to manage the host through vCenter Server. We select the option and then use the spacebar to enable and disable lockdown mode on the host. The next option is to configure the management network. This is typically done immediately after the installation. यानी अगर आपने लॉकडाउन मोड लगाया DCUI में तो फिर आप DCUI को और इंटरफेस को एक्सेस नहीं कर सकते
फिर अपनी सेंटर में सोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। Begin by assigning adapters to the management network. Assigning multiple adapters is recommended in order to provide redundancy, but only one is required. We also have the option to set the VLAN ID, and in case we are not using VLANs, we can leave the value empty. Next, let's set the IP address. We have the option to use DHCP or to set a static IP address. If we use DHCP, we need to configure static IP reservations on the DHCP server. When setting static IP address, we must manually specify the IP address, the mask, and the default gateway. In both cases, the IPs need to be added to DNS with both a forward and reverse lookup record. Going to IPv6 configuration, we can enable IPv6 and configure it with the options available. One thing to note here is that if you enable or disable IPv6, it will trigger an automatic reboot of the host. So we need to be careful because we do not get any warning before it restarts the host. Let us now configure the DNS settings. Here we specify the IP address of our primary and alternate DNS servers, along with the hostname of our vSphere host. The last option we see is to configure additional DNS suffixes. We go ahead and provide the DNS suffixes. Next, we have the option to restart the management network. We do this by selecting the option and then pressing F11, and we see that it stops and then restarts. Next, we go to the test management network. Here we see that it pings the local gateway along with the IP addresses of the DNS server, and then performs a resolution on the host name. If any of these tests fails, we will need to investigate and correct the problem. Let's go to Network Restore options. If a host ever becomes disconnected from the network, we can use this option to restore network connectivity. Here, we see the options to restore the network settings back to a default configuration, as well as to restore a standard switch configuration or a distributed switch configuration. Next, we have an option to change the keyboard layout. Simply select the appropriate layout for the keyboard type. Here we see the troubleshooting options, where we can enable and disable the ESXi shell and SSH services on the host. If we enable the ESXi shell or SSH services, we also have the option to set timeouts to ensure that the services do not get left on indefinitely, as well as to automatically terminate unattended shell sessions. We also have an option to restart management agents. We also have the option to view host logs. These logs include the syslog, the VM kernel log, the config log, the hostd log, the vpxa log, as well as the vobd log. Here we have the View Support Information option. This will show information about the host serial number, license key, SSL, and SSH keys. Here we have a Reset System Configuration option. Using this option, we can reset the system configuration and then reconfigure it from scratch. We go back. Next, we press F12 to look at the options for restarting and shutting down the host. On typing F12, we again need to log in. We'll use the user root account again. Here we get the options F2 to shut down, F11 to restart, and Escape to cancel. Using these options, we can restart a host or shut a host down. We press Escape to exit back to the main DCUI window. This concludes our demonstration on the overview of VMware vSphere DCUI. Thank you. आपने ये भी समझा DCUI क्या चीज़ है। हमारे लेसन ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। बेसिक साइंस इंस्टॉल एंड कंप्यूटर का चाहिए, ये ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। इस पर बेसिक साइंस इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन सीखा, DCUI के बारे में कुछ सीखा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी लेसन है मॉड्यूल 1 का, फिर ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। सही, तो लेसन 15 completed है successful।
Now let's start the last lesson, lesson 16 of this first module. इसका नाम क्या है? सर्टिफिकेशन पार्ट। लेसन 16 स्टार्ट हो चुका है, लास्ट लेसन है मॉड्यूल 1 का, फिर मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा जिसका नाम है सर्टिफिकेशन पार्ट। चलिए ये करते हैं और फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट करें। टोटल 3 मॉड्यूल से 6 महीने के कोर्स में तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना, सॉरी 1 महीना या 1 महीने 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे आज। फिर फ्राइडे को अगला सेशन होगा और 4 छुट्टियां है बीच में, वो भी खूब इंजॉय करें। तो 2 मॉड्यूल्स रह जाएंगे और 1 मॉड्यूल खत्म आज। तो इसका मतलब हम बहुत बेस्ट जा रहे हैं। और ये मॉड्यूल 1 जो था ना, बेसिकली बेसिक मॉड्यूल था कि जो कोई विषय के बारे में नहीं जानता तो उसके लिए अच्छा था, बेसिक था। मॉड्यूल 2 3 एडवांस होंगे, ये बात याद रखना। जैसे मॉड्यूल 1 आता है वो मॉड्यूल 2 3 सीख पाएंगे। इसलिए आपको मॉड्यूल 1 सीखने के लिए जितने प्रीवियस लेक्चर्स है वो देखें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो फिर आप मॉड्यूल 2 3 सीखा करें, तो फिर आपको उसकी समझ आएगी। तो let's start the last lesson number, which one? 16 I think, yes 16 of module 1। इस लेसन के साथ ही मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा। देखिए आपको नजर आ रहा है, ये है सर्टिफिकेशन पाथ, आखिरी लेसन है। फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा। सर्टिफिकेशन पाथ कि आप अगर ये विषय कोर्स कर लो ना, तो आपने विषय कोर्स कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, आपको vSphere का सर्टिफिकेट भी तो चाहिए होगा ना अगर जॉब करना है। तो उसे हम कहते हैं VCPDCV, यानी VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। क्योंकि ये डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन vSphere का मतलब ये है कि डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन के लिए VMware का प्रोडक्ट। तो इसका अगर आपने कोर्स कर लिया, मेरे साथ ट्रेनिंग कर ली 6 महीने की, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, $400 का होता है VCPDCV के नाम से। तो फिर अगर आप वो कर ले तो फिर आपको इसमें जॉब मिलने का इम्कान ज़्यादा होगा, क्योंकि स्किल के साथ सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। Learn and practice with HOL and help prepare for several VMware certifications. VMware Certified Professional, Advanced Professional, Data Center Virtualization Deploy 2021। ये उसका बेच होगा आपके सर्टिफिकेट का। This lab can help you study for industry recognized VCAPDCV Deploy 2021 Deploy certification, which will test that you know how to deploy and optimize VMware vSphere infrastructures. Learn more here. Data Center Virtualization Deploy 2022 सर्टिफिकेशन पाथ, आप ये सर्टिफिकेट करेंगे डायरेक्टली। अगर आप मेरे साथ ये ट्रेन कर लें तो उसके बाद आप ये करेंगे, $400 का सर्टिफिकेट होता है VCPDCV के नाम से। और 212 स्लाइड खत्म हुए और 213 स्टार्ट हुए। 213 से स्टार्ट होगा मॉड्यूल 2 और 212 तक हमारा खत्म हो जाता है ये लास्ट लेसन नंबर विच वन 16, और यहाँ पर मॉड्यूल 1 भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तक है कि आप लोगों ने इतना हिम्मत करके ये बेसिक मॉड्यूल 1 सीख लिया, क्योंकि 2-3 मॉड्यूल अब रहता है, 2 और 3 मॉड्यूल्स इस कोर्स में ना। एक मॉड्यूल तो आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 रहते हैं, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। कंग्रेचुलेशंस, you have completed module 1 with 16
lessons. Now we are going to start module 2. और यहाँ पर हमारा लेसन 16 भी खत्म को पहुंच लेसन 16 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसमें हमने आपको सर्टिफिकेशन बताया कि इस कोर्स का सर्टिफिकेशन आप कैसे करना है, कितनी प्राइस है, $400 की, नाम क्या होगा और क्यों जरूरी है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो यहाँ पर लेसन 16 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कंग्रेचुलेशन, यू कंप्लीटेड मॉड्यूल 1 विद 16 लेसन। मॉड्यूल 1 में आपने 16 लेसन कंप्लीट किए तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल 2। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल 1 का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट विद vCenter सर्वर। के इसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन लेवल तक यानी बेसिक लेवल तक। तो हमने सीख लिया क्या चीज़? मैनेजमेंट विद vCenter सर्वर के vCenter सर्वर में मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें सीख ली है। सही है। मॉड्यूल 1 मुकम्मल तौर पर ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल जिसका नाम है मॉड्यूल विच वन मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 स्टार्ट होने जा रहा है अभी। मॉड्यूल 1 में हमने लेसन्स पढ़े, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। ये थे मॉड्यूल 1 के 16 लेसन्स, ये भी अब कंप्लीट हो गए। मॉड्यूल 1 कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2। देखिए जरा, ये है मॉड्यूल नंबर 2, फिर मॉड्यूल 3 और फिर कोर्स खत्म। तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये मॉड्यूल 2 है। इसके बाद लास्ट मॉड्यूल और फिर कोर्स खत्म। मॉड्यूल 2 में देखिए हमारे पास इतने लेसन है। कितने लेसन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेसन है। और मॉड्यूल 1 में कितने थे? 16 लेसन्स। तो इसका मतलब है कि मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 से एडवांस हो, उसे समझ आएगी जिससे मॉड्यूल 1 की समझ आएगी। तो मॉड्यूल 1 को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, अभी तक जितने हमने रिकॉर्ड किए लाइव। और दूसरी बात कि मॉड्यूल 2 तब आपको समझ आएगी जब आपको मॉड्यूल 1 आता है। मॉड्यूल 2 में 10 लेसन है, मॉड्यूल 1 में 16 लेसन है। मॉड्यूल 2 एडवांस है और इसमें लेसन 6 लेसन कम है मॉड्यूल 1 से। तो स्टार्ट मॉड्यूल 2 में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा लेसन? फर्स्ट नंबर लेसन इंट्रोडक्शन के नाम से। इसमें ये टॉपिक्स है। मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है, अभी मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू vSphere नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। मॉड्यूल 2 में आप तफसीली एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे किस चीज़ के? vSphere नेटवर्किंग और vSphere सिक्योरिटी।
मॉड्यूल 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? In module 2 we will deeply study about two main concepts. First कौन सा है? First है introduction to vSphere networking. Okay, introduction हम करवाएंगे आप लोगों को vSphere networking के बारे में, vSphere networking, और दूसरा and security, vSphere security. तो ये दो मेन कंसेप्ट हम मॉड्यूल 2 में पकड़ेंगे, इसे सीखेंगे. सही है, vSphere नेटवर्किंग और vSphere सिक्योरिटी. कि vSphere में सिक्योरिटी कैसे होती है और vSphere में नेटवर्किंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम तफसील करेंगे मॉड्यूल 2 में. ये दो कंसेप्ट हम इस पर फोकस करेंगे मॉड्यूल 2 में. ये सेकंड लास्ट मॉड्यूल है हमारे इस कोर्स का, और यहाँ पर लेक्चर 88 खत्म हो चुका है. Let's start the new lecture now. This module contains the following lessons. मैंने बताया 10 lessons इसमें. Introduction, आप इसमें क्लिक करके जंप भी कर सकते हो आप उस लेसन में. Adding and configuring vSphere standard switch, working with the vSphere distributed switch. तो ये क्या चीज़ हुआ, ये नेटवर्किंग हुआ ना vSphere में, स्टैंडर्ड स्विच और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. Adding and configuring a vSphere distributed switch using host log mode, configuring the host services and firewall. अब यहाँ से स्टार्ट हुआ. चौथा vSphere का सिक्योरिटी firewall, user access and authentication mode, authentication भी सिक्योरिटी का टॉपिक. Understanding single sign-on, adding and accessing host to Active Directory, certification. तो यहाँ पर लेसन 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन. तो लेसन जो है ना वो हम मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे. जैसे मॉड्यूल खत्म हुआ तो उसमें 16 लेसन थे, तो ये तो अब 17 और लेसन है, मगर हम मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे, पर मॉड्यूल हम लेसन स्टार्ट करेंगे. तो मॉड्यूल 2 में 10 लेसन है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3. तो मॉड्यूल 2 में ये फर्स्ट लेसन है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं लेसन 1. वैसे ये हमारा टोटल अगर देखें ना तो ये लेसन नंबर 17 बन रहा है, क्योंकि लेसन 16 तक तो हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा. अगर हम ये मॉड्यूल के हिसाब से लिखेंगे, दोबारा बता दूं कि मॉड्यूल 1 में 16 थे तो हमने उसमें 16 तक लिखे, मॉड्यूल 2 में 10 है तो हम लेसन 1 से लेसन 10 तक लिखेंगे. हम इस तरह लेसन लिखेंगे, टोटली नहीं लिखेंगे कि अभी जैसे लेसन 17 बनते तो हम लेसन 17 लिखें. समझ आए ना. तो लेसन 1 में हम इंट्रोडक्शन है नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के बारे में, vSphere में इंट्रोडक्शन है, उसे थोड़ा पढ़ते हैं. देखते इसमें कितने टॉपिक्स हैं. ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें से. तो अब जरा समझिए. सही है. The ability to connect virtual machines to a logical switch that is part of the vSphere hypervisor is a necessity for operating systems and applications to communicate on the physical network. इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है.
देखिए सर, the ability to connect virtual machines through a logical switch and virtual switch जिसे आप टच नहीं कर सकते. So the ability to connect virtual machines through a logical switch that is part of the vSphere hypervisor ASXI is a necessity for operating systems and applications to communicate on the physical network. चलिए इस बात को समझते हैं डायग्राम के साथ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यू है हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल है VMware का E6i टाइप 1 हाइपरवाइजर जो हार्डवेयर पर डायरेक्टली इंस्टॉल होता है. फॉर एग्जांपल उस पर कुछ VMs हैं. यहाँ पर बात क्या हो रही है कि द एबिलिटी टू कनेक्ट वर्चुअल मशीन्स, क्या उस पर कुछ VMs हैं, कुछ मशीन है. तो उन वर्चुअल मशीन्स को आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ना, किस चीज के जरिए, एक वर्चुअल स्विच के जरिए. सही है. तो इज अ पार्ट ऑफ द vSphere हाइपरवाइजर. वर्चुअल स्विच किस चीज का पार्ट होगा, इस हाइपरवाइजर का, इस XI के अंदर ही होगा. तो अगर हम देखें ना, मैं आपको यहाँ पर लिखूँ खाली, दिस इज हार्डवेयर, दिस इज सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन. VMware का है E6i और ये हमारे पास एक VM होगा, इस पर OS भी है और एक भी. अब बात यहाँ पर क्या हो रही है पता है आप लोगों को, बात ये हो रही है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये दो VM है, आपने इनको कनेक्ट करना है, इस वर्चुअल मशीन को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये होगा थ्रू अ लॉजिकल स्विच. ऐसे स्विच के जरिए होगा जो वर्चुअल स्विच होगा. क्यों? क्योंकि ये तो वर्चुअल मशीन है ना, इसके लिए स्विच भी वर्चुअल स्विच चाहिए होगा. अगर ये आपस में कनेक्टेड होना चाहते हैं तो स्विच यूज होगा. अगर एक ही नेटवर्क में, तो स्विच कहाँ से आएगा, इज अ पार्ट ऑफ द vSphere हाइपरवाइजर. vSphere का हाइपरवाइजर कौन सा है, SXI है ना. तो ये हाइपरवाइजर जो है इसके अंदर ही वो लॉजिकल स्विच होगा. सही है. तो वो अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख नहीं पाता ना, ये बहुत कम दिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये होगा वर्चुअल स्विच या लॉजिकल स्विच, जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं. फिजिकल स्विच नहीं होगा क्योंकि ये तो फिजिकल मशीन नहीं है, तो वर्चुअल मशीन को आपस में कनेक्ट करते हैं सेम नेटवर्क में, तो आप स्विच यूज करेंगे. तो ये होगा vSphere hypervisor का हिस्सा, ये वर्चुअल स्विच फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट ऑन द फिजिकल नेटवर्क. अगर इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसके एप्लीकेशन है ना, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं फिजिकल नेटवर्क में, तो उसके लिए फिर अलग सा हमारे पास डायग्राम होगा. अगर ये आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं आपस में कम्युनिकेशन, तो फिर इनके लिए वर्चुअल स्विच के जरिए कनेक्ट होना होगा आपस में. कैसे, इस तरह देखिएगा. If this is a virtual switch, so this VM and this VM should be connected to this virtual switch. तो अगर ये कनेक्टेड है तो ये आपस में फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं कनेक्टेड तो नहीं कर सकते. अगर वर्चुअल मशीन है तो फिर वर्चुअल स्विच यूज होगा ना इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए. तो इस बात का यही मतलब था और कुछ मतलब नहीं. आगे बढ़ते हैं. Traditionally, this was done to a standard switch configured individually at each ESXi host in the data center.
इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Traditionally, this was done through a standard vSwitch कि ये वर्चुअल स्विच जो है ना, कि ये ट्रेडिशनली जो ये बीम आपस में कनेक्टेड है ना, ट्रेडिशनली दिस वाज डन, ये कैसे होता था, टू अ स्टैंडर्ड वी स्विच। ये वर्चुअल स्विच जो है ना, ये स्टैंडर्ड वी स्विच के जरिए होता था। ये एक स्विच है, ये देखिए ना, वी स्विच का मतलब है वर्चुअल स्विच, वर्चुअल स्विच। तो ये स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच होता था, उसके जरिए ये कनेक्ट होते थे आपस में, कम्युनिकेशन कर सकते थे। सही है, इसका यही मतलब। ये क्या काम करता है स्टैंडर्ड वी स्विच, इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी एबिलिटी ये है कि ये वर्चुअल स्विच है, वी स्विच वर्चुअल स्विच है, मगर ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि ये क्या करे स्टैंडर्ड स्विच, स्टैंडर्ड वी स्विच कि कॉन्फ़िगर इंडिविजुअली, कि ये वी स्विच जो है ना, ये कॉन्फ़िगर आप करेंगे किस चीज़ पर, हर एक पर, हर एक ESXi होस्ट पर अकेले ही, इट ईच ESXi होस्ट इन द डेटा सेंटर। कि अगर आपके पास डिफरेंट ESXi होस्ट है ना, तो आपको हर एक ESXi होस्ट पर इंडिविजुअली स्टैंडर्ड वी स्विच कॉन्फ़िगर करना होगा उन VMs को आपस में कनेक्ट करने। समझ आ रही है, लेकिन मतलब वही है। यहाँ पर जगह नहीं है। Let me solve this lecture first. This lecture routine है finished here. Lecture 90 started now. मतलब ये था कि आपको हर एक ESXi होस्ट में जाकर एक वर्चुअल स्विच लगाना पड़ेगा, जैसे हम स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच कहते हैं। और हर एक ESXi होस्ट पर आपको, और अकेले ही हर एक पर जाकर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। स्टैंडर्ड वी स्विच का ये। Since its introduction, the vSphere distributed switch quickly became the recommended type of virtual switch. अब आपको क्या मतलब ये कि वर्चुअल स्विचेस के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक वी स्विच वर्चुअल स्विच, वही बात है, कोई और चीज़ नहीं है। ये भी वी स्विच वर्चुअल स्विच, सही ना, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अब डिफरेंस है कि ये वाला फर्स्ट वाला जो टाइप है वर्चुअल स्विच का, वी स्विच का, वो है स्टैंडर्ड। मैंने आपको समझाया अभी भी कि क्या मतलब स्टैंडर्ड, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। दो टाइप्स है हमारे पास वर्चुअल स्विच के, वी स्विच के। तो दोनों ही वी स्विच है, वर्चुअल स्विच है, और दोनों डिफरेंट है। एक स्टैंडर्ड है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टैंडर्ड का मतलब है आपको ये स्विच जो है ना, हर एक होस्ट पर जाकर इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, ये हम समझेंगे। Since its introduction, the vSphere distributed switch quickly became the recommended type of virtual switch to use for most, its, if not all, types of network traffic in and out of the ESXi host. This is due mostly in part of its ability to be created and managed centrally through vCenter, as well as the advanced networking features it provides.
Let's spend some time reviewing the similarities, differences between the two types of switches. तो लेसन वन स्टार्ट हो चुका है इंट्रोडक्शन के नाम से इसमें ये टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्चुअल स्विचेस there are two types of virtual switches in ASXi 4 5 6 whatever V network standard switch and V network distributed switch VDS ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी फिर है V network standard switch V switch VSS V network standard switch is in VMware infrastructure 3 the configuration of each V switch resides on the specific ASXi host. The VI virtual infrastructure administrators have to manually maintain consistency of the vSwitch configuration across all ASXi hosts to ensure that they can perform operations such as vMotion. vSwitches are configured on each ASXi host. वही मतलब कि अगर आप स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है तो आपको ये स्विच आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हर एक ASXi होस्ट पर इंडिविजुअली कुछ और नई बात इसमें नहीं थी we need to distribute switch BCC keys are distributed. The configuration of V virtual distributed switch is decentralized to vCenter server कि ये vCenter server के बगैर नहीं हो सकता और वो हर एक ऐसे साई होस्ट में आप इंडिविजुअली कर सकते हो the 6i456 hosts that belong to a distributed virtual switch do not need further configuration to be complete. Distributed switches provide similar functionality to vSwitches. The distributed virtual port groups is a set of distributed virtual ports. The virtual distributed switch equivalent of port groups is a set of ports, and a virtual switch configuration is inherited from the distributed virtual switch to distributed virtual port group. This is just as from virtual switch to port group. Virtual machines service console interfaces with Swift and Vim kernel interfaces can be connected to distributed virtual port groups just as they could be connected to port groups and vSwitches. Comparing vNetwork standard switch with vNetwork's distributed switch. These features are available in both types of virtual switches. These features are available with both types of virtual switches. Standard और distributed switches दोनों में ये features सेम है ये दोनों में अवेलेबल है कौन कौन सी कि कैन फॉरवर्ड L2 फ्रेम्स जाहिर है फ्रेम्स में वो कम्युनिकेशन होती है तो वो फॉरवर्ड कर सकता है कैन सेगमेंटेड इनटू विलेंस हाँ विलेन भी सपोर्ट करता है दोनों कैन यूज एंड अंडरस्टैंड 802.1 की विलेन एनकैप्सुलेशन जो हमारे पास विलेन की एनकैप्सुलेशन है ना जो आईएसएल है .1 क्यू नेगोशिएट है तो उसमें ये 802.1 क्यू भी ये यूज करता है अंडरस्टैंड करता है विलेन एनकैप्सुलेशन के लिए तभी ट्रंकिंग वगैरह हो सकेगी कैन हैव मोर देन वन अपलिंक टीम भी आप दोनों में कर सकते हैं यानी आप कैन हैव मोर देन वन अपलिंक टीम का मतलब आप मल्टीपल लिंक को जो है ना आप कंबाइन करके उसका स्पीड डबल करो या ज़्यादा करो तो उसमें आप मल्टीपल लिंक्स को कंबाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब कैन हैव मोर देन वन अपलिंक अपलिंक का मतलब है निक जो वर्चुअल स्विच से कनेक्टेड है तो यानी आप क्या कर सकते हो इन दोनों में आप कैन हैव मोर देन वन अपलिंक आप इसमें लिंक एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हो यानी आप फिजिकल नेक जो है ना इन वर्चुअल स्विचेस के साथ क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो जैसे हम अपलिंक कहते हैं तो
यानी अपलिंक का मतलब है कि वो फिजिकल लिंक जो आप वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप उसमें टीम कर सकते हो, आप मोर देन वन अपलिंक इन स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैन यू ट्रैफिक शिपिंग फॉर द आउटबाउंड टीएक्स ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक शिपिंग जो है ना आप आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए कर सकते हो, जो ट्रैफिक अंदर से बाहर जाएंगे, आउट आउट की तरफ, तो आप उस ट्रैफिक को शेपिंग कर सकते हो, उसकी आप उसे मैनेज कर सकते हो, जो ट्रैफिक अंदर से बाहर जाएगी इन स्विच के जरिए आप उनको मैनेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। These features are available only with distributed switch। ये फीचर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में अवेलेबल है। और एक बार बताओ जरा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच जो है ना वो सिर्फ vCenter में होता है, सही है। स्टैंडर्ड स्विच जो है vCenter में भी हो सकता है और सिंगल ESXi होस्ट में भी, क्योंकि वो ESXi होस्ट में इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। दूसरी बात कि तीसरी बात कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, इसके लिए लाइसेंसिंग चाहिए होती है इंटरप्राइज प्लस। आई थिंक अगर आपके पास वो ना हो तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर स्विच का फीचर यूज़ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। आपके पास फिर वो स्विच अवेलेबल नहीं होगा, फिर आप स्टैंडर्ड पे गुजारा करेंगे। अगर आपके पास इंटरप्राइज प्लस लाइसेंस है vSphere का, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर स्विच का फीचर आपके पास होगा, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर स्विच को यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्विच के बजाय। तो फिर आपको आसानी होगी, आपको मैनुअली एक एक होस्ट पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगी। फिर आप vCenter में सारों होस्ट पर कंबाइन करके एक ही स्विच के साथ सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकोगे, एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन कर सकोगे, सही है। These features are available only with a distributed switch। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में ये फीचर्स हैं और स्टैंडर्ड बी स्विच में ये फीचर्स नहीं है। तो कौन कौन से फीचर है, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। यहाँ पर जगह खत्म हो गई है। Let me start this lecture first। देखिए जरा, these features are available only with a distributed switch। अब ये चार फीचर जो है ना, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड में है, सही है ना, ये स्टैंडर्ड में नहीं है। कौन कौन से, कैन शेप एंड बाउंड RX ट्रैफिक, कि जो ट्रैफिक बाहर से अंदर इन हो रही है, आ रही है वर्चुअल मशीन में, उसको ये मैनेज कर सकता है, मगर स्टैंडर्ड नहीं कर सकता जो बाहर से अंदर आता है। हालांकि स्टैंडर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों में यह खासियत है कि वो आउट बाउंड ट्रैफिक को शेप कर सकते हैं, जो अंदर से आउट की तरफ बाउंड हो रही है, जा रही है। अगर इन बाउंड होना कि बाहर से अंदर ट्रैफिक आ रही है, उसको शेप करना, उसको मैनेज करना, तो वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड में फिर हो सकता है। Has a central unified management interface to vCenter server। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का जो है ना, एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, एक इंटरफेस भी होता है vCenter सर्वर के अंदर, सही है। सपोर्ट्स प्राइवेट वीलेंस, प्राइवेट वीलेन का एक अलग कंसेप्ट है वीलेन का, तो वो भी सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, मगर प्राइवेट वीलेन सपोर्ट नहीं करता क्या चीज, स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच। प्रोवाइड्स पोटेंशियल कस्टमाइजेशन ऑफ डेटा एंड कंट्रोल प्लेन्स। आपको तो पता है कि डिवाइस में अगर कंट्रोल प्लेन हो तो वो फिर लुकअप भी कर सकता है, अगर डेटा प्लेन हो तो फिर वो डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस तरह इन डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में ये फंक्शनलिटी ये प्रोवाइड करता है
पोटेंशियल कस्टमाइजेशन ऑफ डेटा एंड कंट्रोल प्लेन्स, कि आप डेटा एंड कंट्रोल प्लेन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। vSphere 5.x provides these improvements to distributed switch functionality, increased visibility of inter-virtual machine traffic through NetFlow, improved monitoring through port mirroring, support of LLDP, Layer District Recovery Protocol, a vendor-neutral protocol, the enhanced link aggregation. The enhanced link aggregation feature provides choice in hashing algorithms and also raises the limit on number of link aggregation groups. Additional port security is enabled through traffic filtering support. Improved single root input output authorization SR-IOV support and 40 GB NIC support. vSphere 6.x provides improvements to distributed switch functionality. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में ये फंक्शनलिटी थी जो वर्चुअल स्टैंडर्ड स्विच में नहीं थी, तो इसलिए ये फिर अपडेट भी हुई, तो vSphere 5.x में इसमें ये अपडेशन आ गया जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के फीचर्स में। फिर vSphere जो 6.x5 के बाद आया था उसमें फिर ये अपडेशन आया डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में। इस तरह vSphere 7 में भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड हुई होंगी, सही है, अपडेशन कुछ आया होगा। तो vSphere 6.x provides these improvements to distributed switch functionality, network input-output console, new support for virtual machine distributed, which switch between reservations to priority isolation and enforce limits on bandwidth. Multicast snooping supports ICMP snooping for IPv4 packet and MLD snooping for IPv6 packets in virtual data distributed switch. Improves performance and scale with multicast traffic. Multiple TCP/IP stack for vMotion allows vMotion traffic a dedicated networking stack. Simplifies IP address management with a dedicated default gateway for vMotion traffic. Virtual standard switch versus virtual distributed switch architecture. Spend a few minutes reviewing the differences between standard switch and distributed switch architectures. Pay special attention to how the port groups and uplinks are designed. और उसके बाद फिर आगे आएंगे। जब तक मैं ऐसा कर चुके व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी सेंड करता हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये लास्ट सेशन ऑफ दिस वीक, फिर 4 दिन की छुट्टी खूब इंजॉय करें सेशन के बाद, और फिर फ्राइडे को मिलेंगे अगले सेशन में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और शेयर करता हूँ ये बुक्स, ये आर्टिकल, सॉरी, vSphere स्टैंडर्ड स्विचेस के बारे में। इस तरह मैं और भी शेयर करता हूँ उनके साथ कि vSphere डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं। vSphere distributed switch architecture. आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने लिंक सेंड कर दिया ग्रुप में, आप पढ़ सकते हो। एक एक चीज़ आपको ये समझा रहे, बिल्कुल बेसिक्स। आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन VMware की तरफ से पढ़ सकते हो।
वैसे भी आप लोगों की 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो उसमें आप पढ़िए ना, क्योंकि अगला सेशन तो फ्राइडे का होगा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें आप खुद ब खुद बिल्कुल बेसिक से समझ जाएंगे ना, बिल्कुल स्टार्ट से, क्योंकि अगर हम आपको ये पढ़ाए ना, ये सारा दोनों डॉक्यूमेंटेशन, तो ये देखिए कितना बड़ा है, तो ये पर इतना बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लगेगा, फिर हमारा इससे तो जवान हम फिर इसमें बिजी रहेंगे, तो ये भी 4-5 सेशन तक लगातार हम पढ़ेंगे तो फिर बहुत मसला हो जाएगा ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करो कि डॉक्यूमेंटेशन आप खुद ही पढ़ें अकेले, आप इसमें समझ जाएंगे, इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, हम पढ़ा रहे थे ना, मगर मसला क्या है कि ये बहुत बड़ा है, आप खुद देख रहे हैं, फिर ये सारा टाइम हमारा ले लेता, फिर हमारा इसे तवज्जो हट जाता ना, हम इसलिए सारा नहीं पढ़ा, आपको सिर्फ गाइड करते। रिसोर्सेज हम आपको दे रहे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे, जैसे मैंने आपको लिंक वगैरह दे दिए, ट्रेनिंग का काम है आपको गाइड करना, और फिर आपका काम है उस पर अमल करना है, तो आपको खुद अमल करके सीखना है, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से मैं समझा रहा था, मगर हर एक चीज़ तो अब अगर मैं समझाऊँ तो फिर तो कोर्स 4 साल का लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत बड़ी होती है, अगर हम उसमें जाएंगे तो खुद सोचो ना, फिर हम अपने कोर्स से तो जहाँ यानी फिर हम इससे अलग जगह पर जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन इस पर हम पढ़े रहेंगे, फिर हम इसमें नहीं आएंगे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने खुद भी मेहनत करनी है, सही है। ये विजुअल स्टैंडर्ड स्विचेस के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा गया है, डायग्राम्स भी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सही है, आप ये पढ़ सकते हैं। टोपोलॉजी डायग्राम है, में से सीखेंगे और क्या है, आप इसमें भी सीख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है, स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, थोड़े मिनट लगाओ रिव्यूइंग द डिफरेंसेस बिटवीन, कि आपको इनका डिफरेंस पता चले इनके आर्किटेक्चर का, आप थोड़े मिनट लगाओ, तो हमने थोड़े मिनट ही लगाए। Pay special attention to how the port groups and pins are designed, यानी आप उस पर तवज्जो देनी है, सारा रीड करने का खुद से इसका ना, यानी आपको रिसोर्सेज दे दी, इसकी स्टैंडर्ड स्विच आर्किटेक्चर यही है, आप देख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यही से स्टार्ट करेंगे 220 नंबर स्लाइड से, और इस डायग्राम को समझेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे कि सर ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए मैं आज ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे आज।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। ये था हमारा लास्ट सेशन ऑफ द वीक। 6 दिन की छुट्टियाँ खूब इंजॉय करें, जो काम रह गया है वो करें। कमिंग फ्राइडे को मिलेंगे अगले सेशन में, सेशन नंबर 19 में। कमिंग फ्राइडे को अगले वीक में तकरीबन ये 6 वीक्स ख़त्म हो गए यहाँ पर, और 7वां वीक स्टार्ट होगा हमारा। आई थिंक ये 7वां वीक स्टार्ट होगा कमिंग फ्राइडे को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।